से start करूं? हाँ करो सर. Good morning, students. Good morning, ma'am. A very good morning to all of you. So today we are going to start a very prominent, very interesting topic. But before starting the topic, I will ask you the few questions which is based on some situations. Listen to those situations carefully and give an answer to that. So my first situation, which is I am basically presenting you is, there is a business unit which is basically earning 10% profit currently. But now they have a mission that we will be going to achieve 30% profit at the end of this year. What this 30% set up by the firm is for the business. Target. The goal. Yes, it is target, it is goal. These are mission, vision and all. Okay. The second situation is, there is a company named ABC who is a manufacturer of pens. They are planning to invent a pen which can record both the audio and visuality effects. What is this new invention for the business? Innovation. Yes. Number 3 situation is, there is a company which is XYZ and they are having the current market share, they are holding a current market share of 10%. But again, they are planning to hold 20% of the market share against WBC company. What is this holding the current market share in the market against the competitor? Market position. Market position or market standing. So students, you have understood, you have listened the entire 3 examples. Now what this target, the innovation, the market position or market standing is directing the business. Business objectives. Yes, students. Business objectives or objectives of business. So students, today we are going to study objectives of business. Okay, before starting with this topic, objectives of business, I will talk about the 2 major topics which should be clear to you before the objectives. The number 1 topic we have is meaning of business. So, business is what? It is a sort of any economic activity which is undertaken to do the production, purchase, sale of goods and services, but with a profit to earn, with a motive to earn the profit. So students, open your notebooks and write down the meaning of business, which basically focus on the 3 parts. It's an economic activity. I'm highlighting the keywords in the meaning of the business. It's an economic activity. It's a production, purchase and sale of goods and services. And the main motive is to earn the profit. There could be no business which is not keeping the motive to earn the profit. Every business, if they want to survive, if they want to stay in the market against their competitors, if they want to expand in the market, they need to earn the profit. Now, moving ahead,
we are going to talk about the definition of business. Many of the experts have given their own views with regard to the definition of business. So here I am going to talk about the definition which is given by Stephenson. What basically Stephenson has said the definition of the business as: business is a regular production, again purchase and sale of goods undertaken to earn the profit or acquire the wealth. Wealth is basically also very important, that it should be maximized only, or acquire wealth in order to do the satisfaction of human wants. Yes, students, it is also very, very important. It's not like that the company should be the selfish one and only thinks about to earn the profit and acquiring the wealth only. It is important that they should basically satisfy the human wants. And by human wants, we don't only mean by the customers. We mean by the workforce, the labor, the workers, the managers who are employed in our organization. Next, we have the main topic of today, that is objectives of business. Depends upon business to business what sort of the objectives they are setting up. But some of the objectives which are mandatory, which are journalized in nature, and every business entity, organization, they need to fulfill it, they need to follow up. And then only they can achieve their targets, their vision statements, their mission statements at the right time. Now, if I talk about the objectives of the business, it influences the prosperity and survival of the business. So it's the key word here is the prosperity, the dignity, and the survival, the sustainability. If they want to have a sustainability in the market against their competitors or for the expansion, the objectives need to be fulfilled. So students, look at the chart carefully. Students, look at the chart carefully. One by one, we are going to discuss about objectives of business. So my number one objective is it visible to you? Students, is it visible? It is not visible to you? Okay. बच्चे फोन पास ले जा एक सेकंड नहीं ऊपर बच्चे कर दे थोड़ा मुस्कान। बच्चे पढ़ा तो नहीं जाता एक्चुअली ना ये लेकिन फिर आप ना कराओ आप कराओ क्योंकि सर फिर ना गिर जाता है हाँ हाँ नहीं इसीलिए नहीं आप कराओ कराओ Okay, our first objective of business is market standing. So students, basically market standing is what we need to attain the current market position against our competitors. If we will beat our competitors on the timely basis and can avail the market opportunities against them, then it will be possible for us to
achieve our targets at the right time, to earn the profits, to make the expansions, to do the diversifications of the business, and so on. So to have a clarity of this concept of the marketing, I'm giving you an example, and on the basis of that example, I'll ask you a question. So my question is to you, there are two competitors in the market. Number one competitor is A, another is B. Both are dealing with the same business, that is selling of stationery items. Now situation here is A is selling the 5 gel pens at rupees 30, and B is also selling the same gel pens at rupees 20. The problem here is what the B should do in order to stand the market against his competitor A. What the B should do? Yes, students. Please Repeat repeat the the price. situation. What? I'm not getting. The A is selling more or B is selling more? A is selling more, that 5 gel pens at 30 rupees, and B is selling that same 5 gel pens at 20 rupees and attracting the customer. Now what should A do in order to attract the customers? A will lower its price. Should lower its price. Yes, A can lower up the price. A can give the free notebooks, free stationery items. Yeah, he can lower the price. He can even give the free items of the stationery like free notebooks, free pencils, erasers in order to attract the customers. Now, moving ahead to the second objective, we have innovation. Innovation, students, is again very important objective for every business enterprise. Innovation is for company dealing with bring technology in their the skills in the product. Students, I'm going to show an example to you, which is basically, is it visible? No. Apple iPhone, which is basically having their basic products same. The phones, they keep the improvement 3Gs, 4, 4S, 5, 5S, and so on. And now we have the 12, iPhone 12 Pro Max also. That means the existing product is same, but they are making the improvements in their product, which the other company cannot even think of. Now, next, moving ahead with the third objective, we have the productivity. Productivity, it's very, very, again, essential. Productivity is what? The investment we are making, the cost which we are incurring, the company needs to cover up in the form of revenue, in the form of wealth, in the form of profit earning. If they will not earn it at the right time, what will be the consequences? Students, look at these two pictures carefully. These two pictures carefully. Number one picture is cost is getting up day by day. Second picture, the revenue, which is getting lower up day by day. Now students, tell me, if the situations will be going up, what will be the consequences for the, what will be the consequences bear up for the company? The company can be in losses. Yes, the company will go into the losses, and one day it will come that they need to shut down their business. Clear, students? Now, moving ahead, further we will discuss the main
The primary and the foremost important objective of every business, that is profit earning, due to which the business actually enters into the market. This is basically a supplement for the business. It is basically a motivation, a morale for the business. So profit earning is the one which helps the business to do the expansion, growth, and survival in the market. Students, let me know what are the basically benefits of this profit earning for the business. It could be rewards. If we have the surplus profits with us, we can distribute the rewards to our that human power, manpower, in the form of bonuses, in the form of giving effective and more enhanced rewards to them. The traveling, the medical expenses, and these yes, profit earning is one of the economic and the foremost object business enterprises. Next, we have the fifth one objective, which is again a part of economic objective only, that is growth. Can you imagine that a business is still standing on the same position from the last 5 years? No. It will be like the manpower inside that organization, the owner themselves, the investors, they all will have a monotonous in working with that organization. So yes, it's very important that business on the timely basis, they should grow up. They should diversify themselves. They should do the expansions. Now I'll give you an example of the Godrej company. Godrej company earlier was basically dealing into only furniture items. But now we can actually visualize that they are dealing with the toiletry items as well. That is what it is, a part of the growth of the business only. They are expanding into the other products. They are entering into the other field of the products also. So students, I'm asking you a question. My question is, what are the factors that affect the business growth? Can you suggest some factors? Yes, students. Political factors, Yes, political factors. Any other economic factors? factors, Economic economic, factors. Yes, economic factors like profit sharing. Yes, yes. Very good, students. So these all are the factors which basically affect, influences the growth of the business. Could be economic, political, and many more. Now we have our fifth factor with us, that is social responsibility. There is no business which cannot there are business which are doing without doing the social responsibility, but society is the place which society is the one which give them the place to enter into the market, to survive in the market. So on the contrary, it is the duty of the business enterprises, organizations also, to contribute towards the welfare of the society. It could be in any form, like they are doing the charity, they are doing the donations, donations in the hospitals, okay, they building up or constructing the parks, participating in the religious festivals. It could be in any form. Clear? So now students, I am showing you two pictures. बच्चे बस Watch कर it carefully. बस कर मुस्कान ये Sir, दूसरा recapitulation chart. हाँ रिकैपिचुलेशन चार्ट है और एक लास्ट और नीचे वाला क्या है वो ये वाला सर नहीं दूसरा चार्ट क्या है वो येलो वाला जो नीचे लगा हुआ है होमवर्क, सर नहीं नहीं होमवर्क. होमवर्क का चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है बच्चे होमवर्क तो आप सिंपली बोल के दे दो है ना बड़ी क्लास है ना Recapitulation एक बार खोल रहा मैं. हाँ खोल दो रिकैपिचुलेशन देख लेता हूँ कैसे
Sir, should I ask to the students or just I randomly open it up? नहीं, बस खोल दो इसको, पूछना नहीं। बच्चे फीडबैक दो, शाबाश। बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, अच्छे बने थे और It's a पढ़ाया भी good अच्छा use था। of teaching aids. हाँ, गुड, वेरी गुड। और दोस्तों शाबाश, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है। हाँ, हो गया बच्चे? Yes, sir. हाँ, ये होमवर्क वाला नहीं बनाना हमने, ठीक है? ठीक है sir. हाँ, ठीक है। बच्चे एक दो बातें हैं, जैसे बच्चे का जो रिस्पॉन्स है जब हमने पीके टेस्टिंग करी है, जो बच्चे का आंसर है ना, वो रिपीट नहीं करना, Yes. ठीक है? वो हमने रिपीट नहीं करना। Okay. और Okay, sir. आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो इतना ट्रिकी क्वेश्चन था, एक बच्चे ने जवाब भी दिया, उसका सही जवाब दिया और कोई रीइंफोर्समेंट नहीं, वेरी गुड, कुछ भी नहीं, है ना? इतने Okay, मुश्किल। sir. Between that I have given, but कुछ में it just gets skip into my mind. देखो, जहाँ पे एग्जामिनर ने पकड़ लिया वो पकड़ लिया बस, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और मीनिंग आपने पहले बोर्ड पे लिख दिया, उसके Yes, बाद sir. उसके बाद बच्चे को बोला है कि ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट, ठीक है? सर मैंने ना बेसिकली कीवर्ड्स जो थे ना वो बेसिकली हाईलाइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉइंटिंग द ब्लैक बोर्ड, तो मैंने इस स्ट्रैटेजी से बोला कि ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन द मीनिंग। हाँ, तो हमने ये पहले ही बोल देना है ना, ताकि बच्चे पहले से ठीक है किताबें, सर। क्योंकि अगर हम बीच में बोलेंगे तो बच्चों का ध्यान फिर वो कॉपियां निकालने में और वो पेन उसमें लग जाएगा और वो जो आप पढ़ा रहे हो उसमें नहीं ध्यान आएगा। अदरवाइज ठीक है सर। ओवरऑल लेसन बहुत अच्छा था। गुड, ओके, थैंक यू सर। हाँ, चलो बच्चे नेक्स्ट 186 के बाद है 190। बच्चे तैयार Yes, है sir. लेसन के नहीं? हाँ जी सर, ready कितना है? अगर नहीं तैयार है तो कल दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मंडे दे दी। नहीं सर, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ लेसन ਮਤਲਬ प्लान ਮੈਂ जमा ट्राई कराया? ਸਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ केड़े वाला? टीचिंग प्रैक्टिस ਸਰ जरा? हाँ जी, ਫਸਟ टीचिंग। ਚ ਕੀਤਾ ਸਰ। बच्चे बोर्ड नहीं दिख रहा, उसको कैमरा नीचे करो थोड़ा, बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। नहीं नहीं, फिर ऊपर हो गया। हाँ, यहाँ रखो। हाँ ठीक है, चलो। हाँ ठीक है बच्चे, कराओ, शुरू करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कराओ शुरू। बच्चे आवाज कम आ रही है आपकी, ऊंचा बोलो थोड़ा सा। एक्चुअली मेरे को ना थोड़ी खांसी है तो मैं थोड़ा आगे आकर बोल रही हूँ। बोलो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़े क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। जैसे कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और हमारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं?
हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं और हमारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं। एग्जाम्स आने से पहले हम पहले क्या करते हैं? टाइम टेबल। प्लानिंग। टाइम टेबल। यस, वेरी गुड। टाइम टेबल की जो प्रेपरेशन है उसको क्या कहते हैं? प्लानिंग। Planning. So now I'm going to present my topic, that is planning. तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग जो है वो हमारे हर एक सब्जेक्ट मैटर में, जो हमारा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, हमारी स्टडीज में प्लानिंग का हमारा बहुत, जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। प्लानिंग के बिना हम कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज ओपन योर बुक्स एंड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। जो हमारा प्लानिंग है वो एक बेसिकली मैनेजरियल फंक्शन है। ये इन्वॉल्व करता है जो हमारा थिंग्स बिफोर डूइंग। इसमें ये होता है कि हमने व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू बी डन। इसमें जो हमारी प्लानिंग है कि हमने कब कब कैसे कैसे क्या क्या करना है, और ये हमारा एक पर्टिकुलर टास्क होता है। और इसमें जैसे कि हम इन्वॉल्व करते हैं हमारी चॉइस मेकिंग एक्टिविटी। इसमें हमारी चॉइस मेकिंग एक्टिविटी होती है और इसमें हमारा जो गोल है वो सेटअप किया जाता है और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो भी सेटअप किए जाते हैं। और जो हमारी प्लानिंग है ये एक टाइम फ्रेम के लिए होती है। सो प्लानिंग का हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है जो वो प्ले करते हैं। प्लानिंग जो की जाती है उसमें देखिए डिटेल्स में देखते हैं कि हमारे जो फ्यूचर्स की हमारी क्या सिचुएशन है। फ्यूचर को नज़र में रखते हुए हम प्लानिंग करते हैं कि हमारे अप्स डाउन कैसे जा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, उसके रिलेटेड ही हम प्लानिंग करते हैं। अब हम आते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में भी यही है कि हमारा जो प्लानिंग है वो एक ब्रिजेस गैप होता है, जहाँ पे हम मैं चार्ट शो करने जा रही हूँ। चार्ट विजिबल है। प्लानिंग जो हमारा है ये ब्रिजेस का गैप है, जहाँ हमारा करंट स्टेटस हमें बताता है कि वेयर वी आर, और जो हमारा गैप है जो हमने कवर करना है फ्यूचर स्टेटस का, वेयर वी वांट टू गो, और हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। हमारा जो ये वो ये शो। अब हमारी जो डेफिनेशन है प्लानिंग की उसमें यही हम बताते हैं कि हमारा जो हमारा गैप है वो कैसे हम कवर अप करके हमारे जो फ्यूचर गोल्स है उसको अचीव कर सकते हैं। जो हमारी फ्यूचर की जो हमारी गोल्स है, जो हमारे स्किल्स है, उसके साथ हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे आते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो आप बताएं अकॉर्डिंग टू यू आपके फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या हो सकते हैं? नहीं बच्चे, बस कर। नहीं, फीचर्स ऑफ प्लानिंग ਤਾਂ ਕਰਵਾਣਾ ही है ना, तो वही क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ नहीं पूछ सकते, ठीक है सर। है ना। और ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ठीक है ਦਿਓ सर। ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪੀਪਲ ਟੀਚਰ ਵਿਲ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੀਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।
और ये चार्ट भी बड़ा छोटा जिहा ब्लैक कलर का लगा रखे है तो कोई फायदा नहीं है बच्चे, ठीक है, पहले ऑब्जर्व करो, ठीक है। हाँ उस तो बाद दोबारा फिर देखेंगे तो मंडे लवांगे लेसन। चलो भी नेक्स्ट कौन है 190 तो बाद 197 है नहीं 202। Yes, sir. चलो बच्चे Good morning, students. एक मिनट Yes. ये कौन सा लेसन प्लान 1 में कराया है? Sir, one. हाँ जी, sir, one. हाँ एक मिनट मुझे तुम्हारा लेसन प्लान निकाल लेने। हाँ बच्चे कराओ शुरू। Good morning, students. Today we are going to start with a new topic. But before starting, I'll ask you a few questions. So don't give collective response. Just raise your hand and give me the answer. Okay. The first question is, tell me, how do you keep your things at home? How do you keep your things, important things, or any particular thing like kitchen utensils or your clothes, everything? How do you keep them? Organization. Proper or by organizing them properly, right? Now, the next question is, what will you do if your important documents are scattered here and there, and you want to find out one particular document from them, but the documents are scattered here and there? What will you do? Management. Yes, you will manage them, and then you will find out your important documents from that. So today we'll learn about the topic management. Okay, students? So what is management? Management is a process. Management is a process of getting things done. Students, write this meaning in your notebook, of getting things done with the aim of achieving goals, and efficiently. So management is the process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. So students, the main keywords of this meaning are, management is a process. I'll tell you how it is a process. And it is done of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Management, first of all, management process. Now look at this carefully. It is a process. How it is a process? As it involves the process, first of all, planning. Now students, you want to go to prep first. What is the first thing you will do whenever you want to go to a trip? Yes, you will do planning. Saying most process management. Then they want to these steps of process in detail in future chapters. So first is planning. The other is organizing. So organizing is we'll organize our plan. Like what we have planned, we'll organize that. In plan, we decide what to do and how to do. And in organizing, we will organize that. That is what we have thought of doing.
we'll organize that, we'll assign the duties, or we'll organize it properly, like arranging the required material and all that. So the other is staffing. By staffing, we mean that appointing the right person on the right job. Okay, we'll plan, then we'll organize, then we'll staff persons. We'll staff the right persons on the right job. Then comes directing. So directing, when we will staff the people, when we will appoint the persons on the right jobs, then we will direct them. We will see if they are doing their work or not. We'll direct. We will provide them the direction that how to do the particular task or what they have to do. We will direct them. And then comes controlling. In controlling, we will monitor if the desired plan is done in a particular direction or not. If like the process, the plan we have thought of, is that being done in the right way or not, we will control it, we will monitor it. And if it is not done in right way, we'll provide some, we will give some direction, and we will plan anything other if the goal is not achieved according to this plan set. So after controlling, it will again plan the new plan if the earlier plan is not successful. Okay, students, are you clear with the process? We will study about these functions later on. Okay, students, is it clear? Yes, ma'am. Good. Now the other terms that we did in the beginning of the management was effectively and efficiently. Can you tell me the difference between effectively and efficiently? Yes, students? So effectively means doing the thing in a right way, in a right manner. Effectively means doing right things at right time or right manner. At right time. And efficiently means doing right things with minimum cost. With minimum cost. So efficiently means doing the right things with the minimum cost. So I'll give you one example. Tell me if the person is efficient or effective. A product manager produces 10,000 units of goods in 2 hours, right? But he appointed extra labor for that. So is he efficient or effective? Tell me. He completed the task in 2 hours. Is he efficient or effective? But by appointing the extra labor for that. Efficient? No, he is effective. Because if he appoints the extra labor, he has to pay for it. He has to pay extra for it. The minimum cost is not there. He'll incur extra cost only. So the right thing is done at right time. He has completed the task at right time in 2 hours. Okay. But he has generated extra cost. He has appointed extra labor and he'll pay for that labor. More costs are generated. So he is not efficient. He is effective. Okay, students? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Is my voice audible? There is some work going on. Is it audible? My voice is audible? Yes. Audible. Now we'll study about one of the definitions of management. Open your
and write down this definition. According to Massey and Douglas, management is the process by which a cooperative group directs actions of others towards achieving common goals. Okay, students, write down this definition. Management is the process by which a cooperative group directs actions of others towards achieving goals. In any organization, there is a common goal, right? There is a common goal. Either they have a goal of sales बस maximization बचे, or profit अमनप्रीत maximization. बस कर। Okay. हाँ बच्चे फीडबैक दो, शाबाश। फीडबैक दसो इस दा लेसन किस तरह दा सी? Sir, the question and answering is very, matlab, it's good. ठीक है, और बताओ। सर कॉन्फिडेंस अच्छा था। ठीक है, गुड। और बताओ बच्चे, सबने नहीं सुना लेसन? Sir, use of blackboard भी अच्छा था। ठीक है, ठीक है, गुड। बच्चे लेसन प्लान ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ सबमिट कराया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जर्नल ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, चेक कर लें। Sir, yes. हाँ नहीं, Oh, sir, no. Sir. नहीं लिए ना? नहीं लिखे sir. और ब्लैक बोर्ड ये कॉपी पे नहीं लगाया? So actually ना वन साइड से तो मेरे पास बैच चार्ट अवेलेबल नहीं था, जैसे करके मैंने बीबी राइटिंग ये इससे मैंने रफ में ही भेजा आपको भी, क्योंकि अगर मेरे पास स्टेशनरी प्रॉपर अवेलेबल नहीं थी। और एक जगह पूछा कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली, तो कैन तो यूज नहीं करना ना, बच्चा कहेगा यस आई कैन डिफरेंशिएट। हाँ जी, है ना? ओके सर। तो उनसे पूछो व्हाट इज ओके डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। हाँ जी, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन। ओके सर। ओवरऑल ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छा है। सर कम्युनिकेशन पीके टेस्टिंग के मेरे को क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था कि इज इट राइट और नॉट। थर्ड क्वेश्चन तो मतलब मैंने जैसे मतलब गलत था मेरा, वो मैंने पूछा ही नहीं अभी, दैट व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस जो मैंने अभी क्लास में पूछे हैं वर दे राइट? हाँ ठीक है, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी आप क्वेश्चंस पूछो ना वो इतने सिंपल होने चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करवाना है। अब आप लोग मुश्किल क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लेते हो तो फिर बच्चा ना कई बार आंसर नहीं देगा जो प्लस वन प्लस टू में पढ़ता है। ठीक है, हमेशा ही पीके टेस्टिंग के बहुत इजी क्वेश्चन होने चाहिए कि बच्चा जो है उनका आंसर दे, क्योंकि जब बच्चा आंसर देता है टीचर के क्वेश्चंस का तो बच्चे को लगता है कि मैडम जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो तो मेरे को आता है, वो ध्यान से सुनता है फिर, या मेरे साथ रिलेटेड चीजें हैं सारी तो वो बच्चा ध्यान से सुनता है। ठीक है ना? हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट बच्चे।
और फिर चार्ट फीचर शुरू है हाँ थे। चार्ट मैंने देख लिया बच्चे, सेम लेसन प्लान हाँ। ये किसी और ने भी दिया है, आपने पहले भी दिया यही लेसन प्लान? नहीं सर, मैंने नहीं दिया पहले। सेम लेसन प्लान किसी और ने भी दिया है, सेम प्लानिंग, सेम एवरीथिंग। ठीक है, कॉपी तो नहीं कर रहे किसी से? नहीं सर, मेरी किसी से बात नहीं है इससे रिलेटेड। हम्म, चलो ठीक है बच्चे, मैंने देख लिया चार्ट आप। ओके सर, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट बच्चे 208। Yes, sir. बच्चे तैयारी करो, 1 मिनट में आपका ना लेसन प्लान निकाल दूंगा। So lesson 1. जमा नहीं कराया? तो कराया है, मतलब फर्स्ट वाला देना है मैंने, फर्स्ट वाला, डिलीवर कर। ठीक है ठीक। हाँ बच्चे तैयार है? हाँ बच्चे तैयार है? Yes, हाँ sir. कराओ। Good morning, students. गुड मॉर्निंग। Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Today we are going to start an interesting topic, but before that, I would like to narrate you a story, and then I will ask you some questions and you answer on the basis of that situation. So Ram went to a shop to buy a piece of cloth to stitch his pants. His tailor detected that the cloth was defective. So Ram took the cloth and he went back to the shop, but shopkeeper refused to change the cloth or to compensate for the defect. So tell me, students, in this situation, who is Ram? He went to a shop. कंज्यूमर। Yes. So what should have been done by the shopkeeper? He should compensate it for the damages. Yes. Can Ram get justice? यस। He should Is, get justice. is there any law by government or an act that protects the consumers? Consumer Yes. Protection Act. Consumer. Yes. So today we learn about Consumer Protection Act, Consumer Protection Act 1986. But before that, first we will understand who is a consumer. So open your notebooks and write down the meaning of a consumer. Consumer कौन होता है? A consumer is a person. A consumer is a person who buys or consumes goods or avail services. In layman's language, consumer is a person who buys or consumes goods or avails services. But under Consumer Protection Act, consumer is any person who buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any scheme of deferred payment. So, any person who buys any goods for a consideration. Here, consideration can be money on the basis of which you are dealing, right? On the basis of which you are purchasing a product and another one is selling the product, which has been paid or promised. Either you have paid in full or you have promised that you will pay, or partly paid and partly promised.
Either you have partly paid, you have paid half of the amount and then purchased, or you have promised half of the amount, or under any scheme of deferred payment. What is deferred payment? Deferred payment is postponement of payment, right? So Consumer Protection Act defines consumer as such. So write it down in your notebooks, the definition of consumer in a layman's language, as well as under Consumer Protection Act. Now students, many of you, okay, tell me one thing. Consumer and customer, are they both same? Consumer and customer, are they both same? No. Yes, very good. No. They are not same, but many people confuse that consumer and customer is one and the same thing, but actually it is not. I will explain you this with the help of an example. Suppose your mother went to the market and she brought a frock for you, right? Here your mother went to the shop, she is purchasing a product for someone else. Okay? In simple way, consumer is the person who purchases, buys goods for self-consumption, and customer is a person who purchases goods for someone else or for the purpose of resale or for commercial use. So consumer is the one who buys for self-consumption. If your mother went to shop to buy a product for you, she is customer at that time, not consumer. If you went to shop to buy product for yourself, you are consumer. And customer is the one who purchases for commercial purpose or for resale. Commercial purpose or resale. And according to Consumer Protection Act 1986, any person who purchases goods for the purpose of resale or for commercial purpose is not a consumer. You have to keep this in mind. Now, what is Consumer Protection Act? What it is? So, Consumer Protection Act क्या है? Consumer Protection Act is an act that protects and promotes interests of consumers through inexpensive and speedy redressal of their grievances. Of their grievances. Now these two terms, redressal and grievances, these will come again and again. What is redressal? Redressal is compensation. बच्चे बस कर And what is बस कर फीडबैक दो बच्चे सर ब्लैक बोर्ड राइटिंग बहुत फास्ट कर रहे हैं, इसी कारण राइटिंग वो शेप नहीं आ पा रही वॉइस की प्रॉपर, ब्लैक बोर्ड राइटिंग ठीक नहीं है ज्यादा बच्चे फास्ट हो रही है। और ब्लैक बोर्ड यूज भी नहीं कितना कॉपी सर वो ना पेस्ट करना था अभी पिक्चर्स। एक्चुअली ना सर यहाँ पे भी कंप्लीट लॉकडाउन है। आई लिव इन डुगरी, तो सर कोई स्टेशनरी अवेलेबल नहीं है। मैं कुछ चार्ट वगैरह भी नहीं बना पाई, बट आई मेड these फ्लैश कार्ड्स विद whatever was available at home। आगे आना था वैसे। और एक वो स्टार्टिंग में दिखाया है वो क्या था सर वो ना मेरा ब्लैक बोर्ड एक्चुअली बहुत छोटा है, तो मैंने डेफिनेशन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की थी वो बहुत बड़ी थी, तो मैंने उसको किया था पहले ही। तो इसका मार्जिन कहाँ है इसका मैं ड्रॉ कर लूंगी अभी। ठीक है और हाँ बच्चे और बताओ शाबाश
So the explanation was good. हाँ हाँ बच्चे लेसन प्लान हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली नहीं है लेसन प्लान ध्यान से देखो और फिर बनाओ इसको ठीक है सर एक तो जनरल ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे आपने जनरल ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से पहले आएंगे ओके ठीक है और आपने उसमें लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक उसकी जगह हमने लिखना है सिचुएशन जो हमने क्रिएट करी है ठीक है और वो स्टार्टिंग में लाइन क्यों नहीं लगाते आप लोग उसमें कॉलम बना के फिर लिखा करो ना स्टार्टिंग में ठीक है ओके सर चलो बच्चे नेक्स्ट यस स्टूडेंट नेक्स्ट ये था हमारे पास 208 नेक्स्ट इज 212 यस सर बच्चे तैयारी है हाँ जी सर हाँ जी एक मिनट जब मैं कहूँगा तब शुरू करना है हाँ बच्चे कराओ शुरू Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम Very good morning. Students, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज Good. Sit down. Business study. Students, next question is कि इस पीरियड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੈ Economics. Good. Sit down. Economics. Students, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੈ Timetable. Very good. Sit down. Timetable. Students, timetable ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ प्लानिंग Very good. Students, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ planning. Students, open your notebook and write down what is planning. What is planning? और योजना किसनों आखदे हैं योजना का अर्थ है भविख वल देखना भविख बारे सोचना कि करना है किसने करना है
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੂडेंट प्लानिंग की है कि प्लानिंग की एडवांस थिंकिंग करना कि फ्यूचर बारे की है ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਲਾਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ? ਸਿਲੇਬਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ इसमें से एग्जांपल ना समझते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़े एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्स ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ टाइम टेबल बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਕੀ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਮਾਰਕਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਡਿੰਗ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो इस तरह की है कि सारा प्रोसेस क्या है कि पहले भविष्य बारे एडवांस से सोच के की करते हैं, प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग एक ही है, प्लानिंग प्रोसेस है, ठीक है? स्टूडेंट ओके एट द चार्ट and listen carefully. फीचर प्लानिंग ਦੇ ਫੀਚਰ ਤਬ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ? ਫਰਸਟ ਇਜ਼ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग की एक दिमागी कसरत है। प्लानिंग से की सिर्फ एक बार एडवांस से सोचते हैं, ठीक है? तो एक बार एडवांस से सारा कुछ सोचते हैं कि करना है, कौन करना है, किवें करना है ना, सारा कुछ किया कि अपने दिमाग ना ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी स्टूडेंट्स बच्चे आंसर दो। ਸੋਚਦੇ कोई भी काम हाँ वेरी गुड ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਤਾਂ एग्जांपल ਸਮਝਦੇ ਆ फॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम्स आ रहे हैं एग्जाम्स ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰੀਏ ਹਨਾ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨਾ तो पहले ਤੁਸੀਂ प्लानिंग करनी शुरू कर देना अपने दिमाग तो ये एक दिमागी कसरत है मेंटल एक्सरसाइज एंड सेकंड परवेसिव प्लानिंग की है परवेसिव एक्टिविटी है तो ये हर व्यापक एक्टिविटी है हर जगह पे हर लेवल पे ये प्लानिंग की जाती है ठीक है बच्चे बस कर जसप्रीत बस कर बच्चे फीडबैक दो दसो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट सर पीके टेस्टिंग अच्छी सी काफी अच्छी सी ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਵਧੀਆ नहीं बट मैं मनु लगता है कि पीके टेस्टिंग अच्छी नहीं सी क्योंकि क्वेश्चन का ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇ
ठीक है बच्चे। और ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾर्ट ठीक है कवर सर ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ है, सर हाँ हाँ बोलो। हाँ जी सर ਸਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੋਈ प्लेन पेपर ले लो। ਸਰ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਬ੍ਰਾਊਨ नहीं कोई भी प्लेन पेपर हो सकता है, ਲੋਨ ਹੈ ਨਾ जरूरी नहीं भी ब्राउन पेपर ही होएगा। ठीक है। और सेम फॉर्मेट हम ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਟਾਈਪ ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੋ ਕਾਪੀ ਚ लगेगा ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਏਚਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਵਰਆਲ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ 212 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 217। ਠੀਕ ਹੈ स्टार्ट करें सर नहीं एक मिनट बच्चे लेसन प्लान कर लो है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ बच्चे शुरू करो। okay very good morning students Good morning, ma'am. hope you all well Fine. What about you? very fine very good okay so today we are going to start with a new and very interesting topic. But before introduction of the topic, I'll ask you some questions. Okay, just give me answers one by one. Don't give me collective answers. Okay. So tell me, students, where are goods produced? In factory. Yes, very good, Madhu. Very good. So tell me, why are goods produced, or why do we need to produce the goods? To fulfill the requirement of customers. Very good, to fulfill our unlimited demands. So tell me, what happens when goods are manufactured or when goods are ready for sale? Yes, tell me, beta. They may be transported or warehoused. Yeah, or it comes into the market, right? Because goods are ready for sale now. Okay, very good, beta, very good. Who buy these products? Customers. Yes, we buyers buying the products. Okay, tell me, what this process of buying and selling of goods is called? Trade, business. Very good, Madhu. So today we will understand the topic of internal trade. Internal trade and its features. So, students, internal trade is a combination of two words. Internal and trade. Internal means within or inside. Inside or within. Trade means buying and selling of goods. Buying and
selling of goods. So internal means inside or within. Trade means buying and selling of goods. So internal trade is a buying and selling of goods within the country. Internal trade means buying and selling of goods within a country. So to be more specific, buying and selling of goods, buying and selling of goods or services takes place within the geographical boundaries of a nation. Buying and selling of goods, just take out your notebooks and write down the definition of internal trade. Buying and selling of goods takes place within the country or within the geographical boundaries, within the geographical boundaries of a nation. So there is an exchange of goods and services within the geographical boundaries. Boundaries means which separates one country from another. So within the geographical boundaries of a nation or of a country. Okay, students, it is referred to as internal trade, or we can call it as domestic trade. Domestic trade. Have you written down? Have you written down in your notebooks, beta? Yes, ma'am. Yes, very good. So let's move further. There are some key points, or there are some points which have to be kept in mind. So there are some components which we have to keep in mind. So the first component of internal trade is internal trade may takes place between buyer and seller in the same locality, village, town or city, or in different states, but within the country, right? So tell me, students, if I need to buy this particular marker, where do I need to go? Or from where I can get this marker? Stationery shop. Yeah, from local shop, right? So as a student, if you need to buy ample of stationery items or some eatable items or some grocery items too, where do you go? Where do you prefer to go? If you need to buy ample of things like stationery items, some grocery items or some eatable items, where do you prefer to go? Market. From departmental store or from central market, from a big bazaar, like, right? So trade takes place in a neighborhood in a neighborhood shop in our locality, or central market or a departmental store. We can call it as internal trade, or we can call it as, we refer as internal trade, or even door to door selling, or from malls, we refer under the internal trade, right? So second point is no custom duty, no custom duty or import duty is levied on such kind of trade. I'll give you an example. There is a trade between India with its neighboring country, Bangladesh. Right? So if India is sending goods to Bangladesh, like we are rich in rice, pulses, wheat. So India is sending goods to Bangladesh. We call it as export. We are exporting the goods. Export. We are exporting the goods to Bangladesh. And when we are receiving the goods, India is receiving the goods from Bangladesh. That means we are importing the goods, or importing the goods from our neighbor country, Bangladesh. Right. So when we are exporting or importing the goods, we have to pay some kind of custom duty or import duty to our government.
right? We have to pay some kind of tax to our government. So this kind of tax is not levied in under internal trade. Under internal trade, we don't have to pay any kind of custom duty because goods are meant for domestic production and are meant for domestic consumption, because goods are part of domestic production and are meant for domestic consumption. We are consuming the goods, right? ठीक है बच्चे, बस कर। बच्चे फीडबैक दो, शाबाश। की ऑब्जर्व कितना? एक्सप्लेन अच्छा किया सर। ठीक है, और बताओ। सर एक जब ये इंटरनल ट्रेड करा रहे थे तब इन्होंने बोला डेफिनेशन, राइट डाउन द डेफिनेशन, बट वाज एक्चुअली द मीनिंग। डेफिनेशन तो अकॉर्डिंग टू समवन होगा ना, ठीक है, वो मीनिंग ही था बच्चे, ठीक है। यस सर। हाँ, और बोलो, शाबाश। आपने लेसन प्लान में प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन नहीं लिखा कि कैसे प्रेजेंट होगा लेसन? पार्डन? लेसन प्लान में अनाउंसमेंट ऑफ द लेसन के बाद हम एक लिखवाते हैं ना प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन। सर वो पिक्चर में क्लिक नहीं हुआ, वो नीचे रह है ना, हाँ, वो नहीं लिखा हुआ। और ये लाइन बड़ी लेट बोली, राइट डाउन इन योर नोटबुक, है नोटबुक्स ना, या ये पहले ही बोल देनी है हमने, ठीक है बच्चे, तभी लिखना शुरू करेंगे। यस। ओवरऑल ठीक है बच्चे, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। थैंक यू। चलो, नेक्स्ट है 217 के बाद 224। यस सर। कराओ बच्चे शुरू। Good morning, students. Hope you all are doing good. So today we are going to start a new topic, but before that, answer me a few questions, okay? What do you mean by bonds? What do you understand by the term bonds? Yes, anybody? Voice not audible. Hello? बच्चे सुन नहीं रहा, थोड़ा ऊंचा बोलो। हाँ, ऊंचा बोलो थोड़ा सा। सर सुन रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहा है बच्चे, सुन रहा है बच्चे, सुन रहा है, Hello? सुन रहा है बच्चे, बोलो। Okay, sir. Before starting our topic, I will ask you a few questions. Please raise your hands and don't give collective response, okay? What do you mean by bonds? What do you understand by the term bonds? Anybody? Yes, anyone? Then are necessities. Yes, these are necessities. Give me some examples of bonds. What all do you Food, want in your daily shelter, life? Yes, very good. clothes. So, how do you satisfy your wants? To satisfy your wants, what do you do? Buy the goods Buy then the, consume them. yes, you buy the goods and consume. उसके बाद, how do you know about new products that are arriving in the market? How do you come to know about these products? Advertisement. Through Yes, advertisement. very good. Advertisements. So today our topic is advertising. What is advertising? Advertising is a tool, basically a promotional tool which helps in promotion of goods and services through mass media like newspaper, television, etc. It is an impersonal form of communication. Basically, advertisement creates a monologue and not a dialogue. What is a monologue? It is basically a person telling you what the product is and what the features of the product are and not receiving the feedback in return. According to David Ogilvy,
is known as the father of advertisement in British. He told that if you want to persuade someone to buy something, you have to speak and you have to advertise in the language they think. For example, अगर आप पंजाबी की you live in Punjab, right? तो अगर आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स देखो, यहाँ पे लोग कनाडा बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो यू सी द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ वीजास एंड IELTS all in Punjabi because Punjabi people understand Punjabi way better than any other language. Okay, open your notebooks and now write down the definition. According to Philip Kotler, advertisement is any paid form of impersonal. Are you all writing? Presentation of ideas, goods and services through mass media by an identified sponsor. Okay, so in this definition, main keywords are impersonal. That is, it is not face to face. A person telecasts it or prints it in print media. Presentation of ideas, goods and services. Goods and services are the products or services which they want to promote through mass media like television, newspapers, or digital hoardings nowadays by an identified sponsor. Sponsor is a person who basically takes money from the companies in order to advertise something, advertise their product. For example, nowadays in Ludhiana, you can see digital hoardings of leaf selling all around the city, and they take some money and promote the goods and services of various companies. Okay, so coming to the features of advertising, first feature is it is a paid form. This means that advertising is a paid form of promotion. That means the company has to bear some cost, some kind of expense in order to advertise their products. Second feature is impersonal. This means that a person is not coming in direct contact or is not promoting face to face their products to the consumers. They are printing it in the newspapers or telecasting in the TV and other media. ठीक है बच्चे, ओके, Third is identity. बस करो बच्चे, बच्चे फीडबैक दो, शाबाश, ये ऑब्जर्व किया, कुछ है पॉजिटिव नेगेटिव? तो यस सर, अच्छा था सर। हैंड राइटिंग जो ब्लैक बोर्ड पे वो थोड़ी सी बड़ी लग रही है। नहीं वो तो ठीक है, वो बोर्ड छोटा है ना, दूर है तो हमें दिखाई देगा, अगर इसे छोटा लिखेगी तो दिखाई नहीं देगा। और बोलो शाबाश। ओके सर। बच्चे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखे लेसन प्लान में? और जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था, गिव सम एग्जांपल्स, है ना? तो जब हमने स्केल ऑफ क्वेश्चनिंग करी थी तो उसमें बोला था कि वेग जो शब्द हैं वो नहीं लेने, सम की जगह आप पूछ लो 2 एग्जांपल्स दो, है ना? 2 एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स, ठीक है? हाँ, बाकी ठीक है।